राशन डलवाने से बहुत बेहतर है कि आप राशन डलवाने के बजाय उस बंदे को किसी काम पे लगा दें। बिल्कुल ठीक है। और वो आप कैसे लगाएंगे? बाय इनेबलिंग द स्टार्टअप्स इन द इंडस्ट्री कि दे क्रिएट जॉब्स। पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को ग्लोबल एक्सेस चाहिए, पाकिस्तान को डॉलर्स चाहिए। एक ऐसा अदारा बनाना जिसके अंदर जो इनेबल करे पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को यूएई में या ग्लोबल मार्केट में एक्सेस देने के लिए। जज्बा तो होता है एज अ पाकिस्तानी कि कुछ गिव बैक है। दैट्स अ वेरी कोर मोटिवेशन फैक्टर। This enabled me to basically build 4 to 5 companies, each focused on a different aspect of technology within certain sector. Hub 47 पे हमने काम करना शुरू किया रफली साल 1.5 साल पहले। कि आप क्यों हैं डायरेक्टर? सो ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत जो है ना मुझे डायरेक्टर के तौर पर सिलेक्ट किया गया। I was working with Telnor for 9 years almost. Was that a learned trait or was that a natural trait for you? The thought process of me being the enabler for everyone else to grow, that was part of me from day one. मैं जब छोटा भी था, जब मैं बच्चा भी था, उस वक्त भी मेरी कोशिश ये होती थी कि जो मेरे दोस्त हैं, मेरे कजन्स हैं, उनको मेरे से कुछ ना कुछ मुसलसल सीखने को मिलता रहे और नेक्स्ट टाइम वो ये काम खुद करें। खुशी भी मिलती है किसी की कैपेसिटी बिल्ड करके। हम ऐसी इन्वायरमेंट बना चुके हैं अपने मुल्क के अंदर कि अगर आप किसी चीज़ पे फोकस करना भी चाहें तो everybody is trying their best for you to not focus on this. This is the platform for all Pakistani startups and companies to come and benefit from. Any new company, any new startup have some very basic challenges, common challenges they need to address. Hub 47's basic mandate is to address those. अगर ये आइडिया फ्लरिश करता तो ये मुझे डिसरप्ट करेगा सबसे पहले मेरे सर्विसेज मॉडल को। तो why don't I get the opportunity to get into that? The fastest or the quickest way for any economy to grow right now is to invest in technology. From this podcast, this is a message to those investors as well, that if you can support Hub 47, it is like supporting Pakistan and supporting Pakistani entrepreneurs. So do open your wallets and fund us to grow Pakistan. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, वेलकम टू प्रेस पॉडकास्ट बाय हब 47। ये पॉडकास्ट आपके लिए है ताकि आप कनेक्ट करें अपने मेंटर्स के साथ, आप कनेक्ट करें इंस्पायरिंग इंडिविजुअल्स के साथ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है और वो आपके साथ अपनी लर्निंग्स शेयर करना चाहेंगे। आज का पॉडकास्ट एक स्पेशल पॉडकास्ट है। आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे हब 47 के साथ। मेरे गेस्ट होंगे उमर राना साहब जो कि डायरेक्टर हैं हब 47 के, और आपको वो शेयर करेंगे की एस्पेक्ट्स ऑफ हब 47 के क्या है हब 47, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है और किस तरह आप इन्वॉल्व हो सकते हैं और उससे फ़ायदा ले सकते हैं। वी होप यू एंजॉय द सेगमेंट एंड डू कमेंट विद योर फीडबैक। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज हमारा पॉडकास्ट का एजेंडा ज़रा फ़र्क है। आज हम अपनी ऑडियंस के साथ हब 47 को शेयर करेंगे, हब 47 का नक्शा प्रेजेंट करेंगे एंड वी आर एक्साइटेड। शुक्रिया आपने टाइम निकाला अपना। आप जो हैं हब 47 के डायरेक्टर हैं, तो सबसे पहले ये शुरू करते हैं कि आप क्यों हैं डायरेक्टर हब 47 के? हाँ जी, बिल्कुल, ये एक बड़ा मज़ेदार सा सवाल है और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड गिविंग द अपॉर्चुनिटी कि आई कैन स्पीक अबाउट हब 47 एंड अबाउट माई सेल्फ। सो मैं क्यों डायरेक्टर हूँ? आई थिंक दिस केम विद अ प्रोसेस। हब 47 पे हमने काम करना शुरू किया रफली साल 1.5 साल पहले और इनिशियली इट वाज अ ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स। आई वॉलंटियर्ड फॉर द कॉज बिकॉज दिस कॉज इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। वी नीड टू वर्क फॉर पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान को इस वक्त हमारी ज़रूरत है। सो उस कॉज को लेके एक ऐसा अदारा बनाना जिसके अंदर जो इनेबल करे पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को यूएई में या ग्लोबल मार्केट में एक्सेस देने के लिए, दैट वाज द कॉज। उसके लिए हमने वॉलंटियर किया। 1-1.5 साल जब इसमें गुजर गया तो ओवर अ पीरियड वी रियलाइज्ड एज अ टीम कि वी नीड टू हैव सम काइंड ऑफ गवर्नेंस एंड सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर अराउंड दिस। एंड फॉर्चुनेटली कह लें या इंसिडेंटली कह लें, because of my background in technology incubation in general, I was given the opportunity by the members of Hub 47 to lead this initiative. So ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत जो है ना मुझे डायरेक्टर के तौर पर सिलेक्ट किया गया। लेकिन जाहिर बात है उसके पीछे एक हिस्ट्री है पूरी, बिकॉज आई बीन डूइंग दिस फॉर लास्ट 10-11 years actually. When I started my own business was fundamentally
based around the concept of the vision statement of the company is that this company exists to solve problems for businesses and communities by the use of technology. Yes. तो इसका मतलब है हमारा जो पर्सपेक्टिव था वो शुरू से यही था कि यार हमने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है सॉल्व करने के लिए माशरे की जो मसाइल हैं और बिजनेसेस के जो मसाइल दैट वाज द और उस जाहिर बात है जब आप मसाइल की बात कर रहे हैं तो you're not talking about one application, you're not talking about one solution. Yes. So the whole concept was to build a platform, to build a system where new ideas can come in और उनको एक nurturing environment मिले और इस environment को use करते रहे वो ideas flourish करें, eventually independent entities और companies की शक्ल इख्तियार करें. जी. So that was the concept और 10 साल से मैं उस पर काम कर रहा था अपनी कंपनी की फॉर्म में. तो इसमें जो है आपने बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट शुरू में भी टच किया. आई थिंक सबके अंदर जज्बा तो होता है एज ए पाकिस्तानी ये कुछ गिव बैक. आई थिंक दैट्स अ वेरी कोर मोटिवेशन फैक्टर इस पूरे जर्नी में जो आपने बताया 10 साल से आप कर रहे हैं. आपका पर्सनल जर्नी जो है आप दुबई कितने साल पहले शिफ्ट हुए थे? जी, दुबई 2021 में शिफ्ट हुआ. Alright. और उसकी बुनियादी रीज़न आई वुड से कि जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज़ हम बिल्ड कर चुके थे पाकिस्तान में उसको इंटरनेशनल स्केल पे लेके आना था. बिकॉज एक चीज़ का अंदाज़ा हो रहा था कि एक तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करवाना है तो उसको बड़ा फंड चाहिए जी. और बड़ा फंड जो है वो पाकिस्तान के अंदर से जनरेट करना रिलेटिवली डिफिकल्ट है. वेयरएज जो स्किल सेट हम डेवलप कर चुके थे पिछले 7-8 साल में वो स्किल सेट थी जो कि अक्रॉस द ग्लोब रिक्वायर्ड स्किल सेट थी. एंड this is true for almost all technology or any companies in Pakistan. Yes. The skill set they have is very relevant to the global market. So उसी थॉट को लेके हमने कहा कि लेट्स टेक द इनिशिएटिव, कंपनी को यूएई में मूव किया जाए, आई मीन एक ब्रांच ओपन की जाए और उस ब्रांच के थ्रू उस कैपेसिटी को इंटरनेशनली एक्सपोज किया जाए, सेल किया जाए, डॉलर्स कमाए जाएँ और ज़ाहिर उसमें मुल्क का भी बेनिफिट है और ऑब्वियसली जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी इट सेल्फ ग्रो करेगी. हाँ जी. तो हाउ डज दैट लिंक इनटू, आई मीन आपका एक पर्सनल जर्नी चल रहा है माशाल्लाह, यू अचीव्ड अमेजिंग थिंग्स, बहुत ज़बरदस्त आपकी प्रोडक्ट्स आई हैं एंड देव ऑलवेज बिन एट द एज ऑफ इनोवेशन एज दे से. जिस चीज़ का किसी ने नहीं सोचा होता वो आपने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसको सॉल्व किया. एंड आई थिंक that is the target audience for HUB47 as well, in a way, to facilitate people like that who are trying to achieve the things that you've achieved, and that makes you an ideal candidate to, in my opinion, to lead this initiative as well. But जब आप आए दुबई, आपने कहा कि 10 साल से आपका ये जर्नी चल रहा है to also in your personal capacity enable other people. Did that also play a factor in your decision to move to Dubai? Yeah, that was definitely one of the very important factors, and that's an enabling factor as well in a way, because if I would have had one company जिसकी एक कैपेसिटी होती है और मैं उसको बिल्कुल hate to say that but ट्रेडिशनल पाकिस्तानी स्टाइल में चला रहा होता, controlling each and every aspect of it, so it would never have been possible for me to move away from that company and work on something else. क्योंकि ये इंक्यूबेशन का माइंडसेट था, ये इनेबलर माइंडसेट था जो आपके अंदर डेलीगेशन वाली अप्रोच बिल्ड कर देता है कि यू हैव टू डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो व्हाट दिस enabled me to basically build 4 to 5 companies, each focused on a different aspect of technology within certain sector. Because these companies were independent, they had their own complete hierarchy up to the CEO, which means those companies were never dependent on me. The moment they became independent and have a CEO, they are not dependent on me for any day-to-day engagement. Yes. It's a more strategic level of engagement. Even within my own entity, the Alchemative, the second tier was always with priority to be developed. Because I always knew that I can only go so far alone. Yes. Okay? And it's very easy to grow alone, but it's very difficult, and it's difficult to grow together. Very but difficult. When you grow together, you have the capacity to cover a longer distance. Was that a learned trait or was that a natural trait for you? Okay, इसमें दो चीजें हैं. I am my background is technology. Yes. Which means by nature I am a micromanager. And I am somebody who is a controlled person. Controlled. Because technology people generally have the temperament of doing things themselves. Yes. And I come from a family background of in a similar manner as well. My father is an engineer as well. So as a family we were also more hands-on. Less, I would say, strategic and managing type. Okay. So this is a learned trait. But the other aspect, I think, which helped me very quickly
learn this, two things. Number one, the thought process of me being the enabler for everyone else to grow. Yes. That was part of me from day one. मैं जब छोटा भी था, जब मैं बच्चा भी था, उस वक्त भी मेरी कोशिश ये होती थी कि जो मेरे दोस्त हैं, मेरे कजन्स हैं, उनको मेरे से कुछ ना कुछ मुसलसल सीखने को मिलता रहे और नेक्स्ट टाइम वो ये काम खुद कर लें. सो उसका मकसद अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं होता था, बट द पॉइंट वाज कि आई नीड टू एनेबल एवरीवन अराउंड मी. तो दैट वाज वन थिंग. एंड सेकंड थिंग, व्हाइल माय टेन्योर एट टेलीनॉर, ठीक है, आई वाज वर्किंग विद टेलीनॉर फॉर 9 years ऑलमोस्ट. सो टेलीनॉर में मुझे एक प्रमोशन मिली एक ऐसे टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में जिसकी मुझे अलिफ बे भी नहीं पता थी. एंड इट वाज, आई थॉट, मे बी ऑन द कंपनी साइड डिलिबरेट, but even on my part, I deliberately took that. So I was given an option to be promoted in the current department or to take a position in the department which I know nothing about. And I took the opportunity to go in a department which I know nothing about. Why? Because I figured out that उस department में complete structure missing है. So I would have the opportunity to grow more. And I was never afraid of challenges anyways. But that put me in a situation where I have to depend on others to deliver that stuff. Because I was not the expert of that. So in a way that helped me in that 2-3 years, helped me develop that trait of no, I need to depend on others to build bigger things. I think एक इंटरेस्टिंग फ़र्क होता है, शायद सिखाने का शौक़ होता है, एक खुशी भी मिलती है किसी की कैपेसिटी बिल्ड करके. बट मेरे साथ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जब कोई काम बड़ा इंपॉर्टेंट हो और उसका आउटकम मुझे इफेक्ट करो, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लेट गो देन. तो दैट इज़ समथिंग, शायद व्हेन यू सी, आई थिंक सीइंग इज़ बिलीविंग इन दैट. जब आप उसको इन एक्शन देखते हैं और उसको, एंड इट्स एक्चुअली वर्किंग फॉर यू एंड यू आर एबल टू मल्टीप्लाई योर इम्पैक्ट, दैट्स द ऑब्जेक्टिव एज अ फाउंडर, एज एन एंटरप्रेन्योर. I still suffer from that. Sometimes, yeah, I still suffer from that. Sometimes it happens that there's a problem and I know I can solve this problem maybe in 30 minutes. And getting this problem solved through my team or somebody else might take 1 day or a couple of hours. The first instinctive response is always I start to doing that. But then in the middle, I stop myself. No. If I do it today, then I'm always going to do it. So I have to stop, I have to get somebody involved in this and tell them how to do it. So next time they can do it. So yes, that impulse, that instinct is still there, but I have to deliberately control that. I think it would require a lot of discipline. I'm generally not a very disciplined person, but I think in this part, I'm able to do that. I can imagine, because I struggle with that personally as well. So, great. Moving on, आपने बताया कि आपका ये पैशन था शुरू से, आपके एक्सपीरियंस ने आपको हेल्प किया उस चीज़ को डेवलप करने के लिए. एंड देन दुबई आप शिफ्ट हुए, एंड डिड यू सी sudden growth in prospects in business? Yes, definitely. Obviously, business growth to obvious thi, because the value of money, the value of projects, the value you get for your work is much different than Pakistan. And being in Dubai gives you an additional advantage of that you can get projects not just from Dubai. आपको पूरी दुनिया से लोग अप्रोच करते हैं, because it's considered as a different level. पाकिस्तान में relatively आपको, you are the one who's trying to hunt, whereas दुबई में आप hunt तो कर रहे हैं, but लोग भी आपको अप्रोच कर रहे हैं, direct, organically भी अप्रोच कर रहे हैं. So that is one part. But the bigger thing, I believe, the bigger contribution I would say moving to Dubai was the exposure I personally got. My way of seeing the world change after moving here. When you are living in a multicultural, multi-ethnic society, और जो बड़ी fair और equitable terms पे define हुई हुई है, जहाँ पे opportunities exist करती हैं और opportunity के लिए merit पे आपको struggle करके आगे बढ़ना है. So I think your whole thought process gradually starts changing. And it have changed me for good, I believe, so far. This roughly 3+ years of journey in Dubai, I would say it have transformed me internally so much कि शायद वो पिछले 10-20 साल में नहीं हुआ था. ठीक है, तो and positively mostly. Even I did said that I'm not disciplined, but I believe a lot of people take me as a very disciplined person. और उसकी बुनियादी reason is the environment, the piece of this environment, which allows you to focus on what you really want to focus. Unfortunately, हम ऐसी इन्वायरमेंट बना चुके हैं अपने मुल्क के अंदर कि अगर आप किसी चीज़ पे फोकस करना भी चाहें तो everybody is trying their best
to you for you to not focus on what you try. Environmental impacts जो हैं Yes. वो negative हैं आपके ऊपर. And I think हमारी जो audience है and the community that we're trying to build, a lot of people are contemplating that process, that decision as well. कि should they not? I think having access to people like you who are involved in this forum would be very beneficial for them moving forward. Yeah, I believe naturally जो भी कुछ मैंने सीखा it's always about transferring it to the whoever is available to receive that. Yeah. That's a very default process for me. So and through Hub this is what we are trying to achieve as well. Because Hub actually क्या है हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को पाकिस्तानी कंपनीज को लाके प्रिपेयर करना चाहते हैं टू डू बिजनेस इन मिडिल ईस्ट एज वेल एज ग्लोबली बिकॉज व्हाट आई बिलीव कि जो यूएई की प्रिपरेशन है वो बहुत रेलिवेंट है ग्लोबली. Yes. So this is the platform for all Pakistani startups and companies to come and benefit from. Great. Incubation के बारे में बात करते हैं in focus because that's a very significant part of what HUB47 aspires to be. It aspires to be an incubation center. It aspires to be a center where a lot of value can be accessed by startups, by Pakistani startups who are setting up shop in the UAE, want to set up shop in the UAE. And आपने भी you alluded to the fact that incubation was a passion for you. It's a journey of over 10 years for yourself. How does HUB47 now come into the picture? So as we were just talking about HUB47, any new company, any new startup have some very basic challenges, common challenges they need to address. HUB47's basic mandate is to address those. So what are those challenges? We are talking about company formations. Yes. So initially most of the tech founders, they are not very well versed in company formation laws and what kind of company and what jurisdictions and what laws are applied to them. Company structures, how should the structure be built? I'm talking about the legal structure. Yes. This is something which is an afterthought in most cases. They develop an organization and then after 2 years, 3 years, then okay, this is wrong, we need to structure it. And it's a key difference between Pakistan and UAE, which is quite regulated in terms of business setup. Yes. And when we talk about company structuring, automatically we're talking about the equity structures and stakeholders and all of that. उसके बाद जो बहुत important चीज़ होती है जो I think we Pakistani startups generally lack that is the ability to present it properly. Yes. We are very good at building ideas. We are very creative people. We are tech savvy. We learn very quickly. But somehow our education system and the society in general does not teach us how to present. Yes, ये जो आजकल की बिल्कुल नई जनरेशन है जिसको हम Gen Z कहते हैं जी. उनकी जो स्कूलिंग सिस्टम है उसमें प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है. Yes. लेकिन एटलीस्ट फ्रॉम माई टाइम टू अ वेरी रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग नहीं होती थी. Yes. आप प्रेजेंटेशंस पे फोकस नहीं है, आपके अपने काम को प्रेजेंट करने पे फोकस नहीं है, काम खत्म करने पे फोकस है. सो वो जाहिर बात है वो टेम्परामेंट एग्जिस्ट करता है. सो दैट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच HUB47 प्लान्स एंड इज फोकसिंग ऑन हाउ टू टीच देम हाउ टू प्रेजेंट योर आइडिया, हाउ टू बिल्ड एन इफेक्टिव पिच. अच्छा, उसके बाद फाइनेंशियल मॉडलिंग. Again, because we're talking about tech startups, which means tech founders typically are not well versed in finance as well. They do not have a finance education. So जब उन्होंने pitch build करनी है तो the most important aspect of a pitch is the business case, the financial case, projections, long future value of the company, current expenses, run rate कितना है, कितने पैसे चाहिए month on month, and all that. So that's one of the areas. I think that's an important point because that's a skill set that many founders would not have. If a standard founder, a standard technology entrepreneur wouldn't have to learn or seek help in these areas. Exactly. So this is another area. अच्छा, once this is done, then you take the next step, which is the outreach. अब वो आपने मैसेज बना लिया, पिच बना ली, अब ये मैसेज पहुंचानी है लोगों को इन्फॉर्म करना है कि आपने वो राइट फोरम, राइट ग्रुप्स तक पहुंचाना है उसको. दैट इज़ वेयर हब विल प्ले इट्स पार्ट बिकॉज हब का अपना एक प्लेटफॉर्म है अंडर पैड. पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी स्ट्रांगली कनेक्टेड है इसके साथ. बीइंग इन यूएई यू हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ ट्रैक्शन एंड अवेयरनेस अराउंड इट. और जो मेंबर्स हैं हब के, जो लोग जिन्होंने वॉलंटियर किया,
वो सारे अपने जगह पे एक्सपर्ट्स हैं, अपनी अपनी कंपनीज में टॉप पोजीशंस पे हैं या अपनी कंपनीज रन कर रहे हैं. दे हैव देयर ओन नेटवर्क्स, दे हैव देयर ओन एक्सपीरियंसेस टू शेयर अराउंड ऑल दीज एरियाज. तो आउटरीच का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ना वो आ जाता है. देन देयर इज अ मार्केटिंग फंक्शन, हाउ टू पुट योर आइडिया टू द वर्ल्ड. लोगों तो कैसे पहुंचाना है उस आइडिया को. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू. अच्छा, वंस यू हैव डन दैट बेसिक्स और आपको बेसिक ट्रैक्शन मिल गई है, नाउ स्केलिंग. Yes. Scaling is one of the biggest challenges we face as in tech sector. We see a lot of companies get it funded and then after 1 year, boom. Yes. And that is basically scaling. And when I say scaling, it's not just technology scaling. It's human resource scaling. Human resource. It's organizational structure scaling. It's financial planning. It is compliances and so forth. So वो सारा का सारा जो part है, I believe Hub can help people with that. Again, because of the community, the volunteers in Hub who are capable of handling or have seen these scenarios play out repeatedly in their careers. So this is what Hub fundamentally is all about. Supporting a startup or a tech company, especially tech. So why we focused on tech? This is very important to understand. Because we believe the fastest or the quickest way for any economy to grow right now is to invest in technology. Because every other sector takes a certain amount of time and a very high capital mostly. You go to property, you go to agriculture, whatever. There's a high capital requirement. Technology typically have a very low capital requirement. It's all about human capital. It's not about the financial capital most of the time. That is the reason we selected tech-enabled startups in comparison to others. So, yeah. आपने एक बड़ा इम्पोर्टेंट मेंशन किया था कि आपके पास HUB47 में the people who are involved are very important aspect of HUB47 as well. They are people who are who've achieved something in life themselves. They have personal experiences to share. Are all people involved volunteers? What is the overall structure? आपने aspects बता दिए. So we structure पे बात. So we have structured Hub into different departments, and each department, when I say department, which means I'm talking about outreach department. So outreach and business development, from the name of it, we understand what kind of role this department is going to play. Yes. So there are a couple of people in this department who are passionate about outreach and business development, and they have background in that area. Then there's a marketing department, finance. Now, finance is not just finance of HUB47. Finance is finance of the startup that is going to come on board. Yes. The finance department is going to guide that entrepreneur how to build the right pitch, how to build the right business plan, and what is scalable, what is not. Yes. And then program design. Operations is very important. It's because key. The whole thing is basically run by operations in one way. Everybody is, वो कहते हैं ना, that's the fulcrum or that's the connecting piece for everyone else. So yeah, this is how Hub is structured. And in terms of the business model, I understand it's a community-driven, it's a not-for-profit thing. It's a not-for-profit organization. ये एक बड़ा different चीज़ है. You don't see incubation centers. Exactly. So this is also a USP. Because a startup can come to us without the fear of, which is very typical fear of a startup, कि यार जिनके पास मैं जा रहा हूँ वो इस मदद करने के पैसे कितने ले लेंगे मेरे से. हाँ जी. ठीक है. उनका कमर्शियल इंटरेस्ट क्या है, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है. बिकॉज द कॉन्सेप्ट इज एनी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज ऑपरेटिंग थ्रू अ वेस्टेड इंटरेस्ट, बिकॉज इट्स अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन. Whereas an organization which is not for profit and it's just for community development and specifically focused on Pakistani technology and businesses in general would give you a comforting factor, a security or a safety कि हाँ यार ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे से कुछ मटीरियल बेनिफिट या कोई बेनिफिट ड्रॉ नहीं करना. इनका कोर इंटरेस्ट ये है कि मैं ग्रो करूँ, बिकॉज मेरे ग्रो करने से लिंक्ड है पूरा का पूरा पाकिस्तान जी, और इनका कोर इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान ने ग्रो करना है. सो आई थिंक दिस इज आवर USP. Yes, this is a challenge at the same time. And we need support from a lot of people to solve this challenge. और ये challenge कहाँ से है? In order to run this kind of organization, you need funds. Yes. And if we are a not-for-profit organization, we do not have a direct income source, and we might never have a direct income source, which means we will always be dependent on funding sources. Right. So
from this podcast, this is a message to those investors as well, जी. that if you can support HUB47, it is like supporting Pakistan and supporting Pakistani entrepreneurs. So do open your wallets and fund us to grow Pakistan. And I think आपने एक शुरू में भी बात की थी about your personal journey. यहाँ के थोड़ा सा mindset change होता है, थोड़ा सा दिमाग खुलता है. A lot of investors existing here who are actively investing in other ventures, I think they should have no problem being the fact that this is independent. एक अपना कोई एजेंडा नहीं है. The agenda is Pakistan and पाकिस्तानियों की मदद करना. And we are housed, we are based, we are sponsored by Pakistan Association Dubai, which again is an example for the community in Pakistan of what can be achieved if the right factors, the right motivation, the right intentions are combined, and community का क्या impact generate हो सकता है. Pakistan Medical Center है जहाँ पे not only Pakistanis but 100+ nationalities get benefit, and if a hub is based on those same ideals, एक तो impact बहुत ज़बरदस्त create हो सकता है और दूसरा लोगों को जुड़ने में मसला नहीं होना चाहिए. देखिए इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और एम्फोसाइज करना चाहूँगा. अगेन दिस इज़ रूटेड इन आवर कल्चरल, आई वुड से हमारा कल्चरल चैलेंज कह सकते हैं उसको. व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्पिंग समवन वाया फंडिंग, वी कन्वर्ट दैट थॉट इनटू charity, which means any hospitals, medical institutes, food programs, schooling programs, education programs come to our mind. Yes. And our and Pakistan is one of those countries जहाँ पे बहुत ज़्यादा charity और funding होती है. जी. ठीक है. जी. लेकिन बिजनेस को डेवलप करना को वो चैरिटी नहीं समझते या फंडिंग नहीं समझते या हेल्प नहीं समझते. वो उसको कमर्शियल एंटरप्राइज समझते हैं. Whereas in my opinion, enabling a society to create jobs is far better than enabling a society to sit at home and get the money and food. Yes. राशन डलवाने से बहुत बेहतर है कि आप राशन डलवाने के बजाय उस बंदे को किसी काम पे लगा दें. बिल्कुल. ठीक है. और वो आप कैसे लगाएंगे? बाय enabling the startups in the industry कि they create jobs. Yes. So I think this fundamental thought process needs to change in our country. There are a lot of people who have funds and they are continuously supporting. आपने एग्जांपल दी ये PMC की है, जो भी हमारे यहाँ पे अदारे चल रहे हैं हब के पैड के अम्ब्रेला के अंडर, वो सारे फंडिंग किस बात चल रहे हैं जी. लेकिन अगर आप उनको हम देखेंगे तो वो हमारे पाकिस्तानी कल्चरल नैरेटिव को फिट बैठते हैं फंड करने के लिए, हेल्प करने के लिए. जी. टेक इंक्यूबेटर का जहाँ कॉन्सेप्ट आता है वहाँ ऑल ऑफ अ सडन यू बिकम कमर्शियल कि अब मैं तो एक्विटी लूंगा तो बात करूंगा. ठीक है, आप स्टार्टअप से एक्विटी लें, लेकिन ये अदारा तो स्टार्टअप को इनेबल कर रहा है, ये तो पैसे नहीं कमा रहा है. So इसके लिए तो आप उसी तरह सोचें जिस तरह आप मेडिकल सेंटर के लिए सोचते हैं, जिस तरह आप एक स्कूल के लिए सोचते हैं, हॉस्पिटल के लिए सोचते हैं. वेरी वेल सेड. इसमें एक और एस्पेक्ट आ जाता है मेंटोर्स का, मेंटरशिप का. आप एक कम्युनिटी बना रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल्स को इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं जो कि who have achieved something in life. So how important are those people for startups, you know, or for founders or for people who are thinking of becoming founders as well? अच्छा, so you're talking about the team? नहीं, बिल्कुल टीम, but the team are the mentors, right? Yeah. जो क्या मिलेगा एक बंदे को जो आपके पास आ रहा है? देखिए, हम जब एक बात कर रहे हैं कि हमारे पास वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स आमतौर पे अगेन ये भी एक आई वुड से अ टर्मिनोलॉजी विच इज़ वेरी मिस रिप्रेजेंटेड एवरीवेयर कि वॉलंटियर का मतलब है इसके पास कोई और काम करने के लिए नहीं है इसलिए वॉलंटियर कर रहा है. वेयर एज ग्लोबली वॉलंटियर्स आर टिपिकली दोज पीपल हु हैव अचीव्ड enough in their life that they have spare time to dedicate to social causes. Yeah. And I think Dubai is one of those places. यहाँ पे किसी के पास वक्त ही नहीं है. जी. ठीक है. Everybody is in that rat race of survival and growth. So वहाँ पे अगर कोई टीम मेंबर या कोई बंदा टाइम निकालता है तो टिपिकली वो टाइम उसी के पास है जो एक सर्टन लेवल ऑफ सक्सेस अचीव कर चुका है, जो अफोर्ड कर सकता है कि मैं हफ्ते के इतने घंटे इस कॉज को दे दूंगा. ठीक है. उसके पास वो घंटे हैं. इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि ये वो लोग हैं जो अपनी लाइफ में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करते हुए, सक्सेसेस एंड फेलियर्स लेते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, एंड दे हैव दैट वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस
and knowledge which they can transfer to those entrepreneurs, young entrepreneurs. तो उनकी journey आसान हो जाएगी. And why this is also very close to me, HUB47 का concept जो है, other than incubation. When I started business, I did not have a business background. इसका मतलब है मुझे भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी जब मैंने शुरू किया. बिल्कुल. ठीक है. और उस वक्त ये इतना कॉमन फिनोमिना नहीं था when I started this. And I was in a way at that time very unfortunate. I never had mentors in my life initially. After reaching UAE, I think I started having mentors. अब ये वो mentors हैं जिनको आप अर्ली स्टेज mentors नहीं हैं. अब now you're talking about people who are already very successful CEO and now you have an opportunity to talk to them. 2-3 घंटे आपको उनसे बात करने का मौका मिला या किसी कॉन्फ्रेंस पे आप मुलाकात आपने की, वहाँ से यू डेवलप दैट कनेक्शन. सो अब उस लेवल की आप लर्निंग ले रहे हैं. दैट लर्निंग की कोई ग्रो नहीं कर सकता. बट आई बिलीव कि आई हैड बीन अनफॉर्चुनेट पर्सन इन दैट रिगार्ड कि मुझे बिजनेस के शुरू के टाइम पे ऐसी कोई अप्रोच मेरे पास या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मेरे पास नहीं था. सो इफ दीज प्लेटफॉर्म्स नाउ एग्जिस्ट, आई एग्री. आई थिंक आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट किया, मेंशन किया कि आपको एक्सेस ही अभी मिला CEO लेवल एडवाइस का, बट आई थिंक जो आपको एडवाइस दे रहा है they would not have minded spending some time with you 10 years ago as well. Exactly. But there was no platform. There was no platform. जहाँ पे ये enable हो सके. दूसरा एक और चैलेंज है जो कि मैं अगेन एंटरप्रेन्योर्स को कहूँगा कि आजकल के एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो हमारे ज़माने में रिलेटिवली कम था. In order to be part of a CEO peer group, in order to be part of these kind of groups where you get this kind of mentorship and coaching, you have to already do something. You have achieved something. Yes. वरना आपकी एंट्री नहीं है. जी. मतलब ये जिस तरह के प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योर्स ऑनलाइन है, विस्टेज है, ये बड़े बड़े अदारे हैं. जी. इस पे मेंबरशिप का क्राइटेरिया है. अच्छा, इज योर कंपनी मेकिंग $5 million or $1 million? Based on that, you get entry into these forums. Yes. And then you start learning more and more and more. Yes. अब आसानी क्या है, हब जैसे अदारे और इस तरह के बहुत सारे जारी बात है. नॉट एग्जैक्टली नॉट फॉर प्रॉफिट वाली बात मैं कर रहा हूँ. जनरली देयर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान एज वेल जो ये मेंटरशिप देने के लिए बड़ी अर्ली स्टेज पे तैयार हैं. जी जी. And that inshallah that has an impact 5 years, 10 years on. Maybe it's not immediate, but by cutting short, I would say the journey of these entrepreneurs, these new startup founders, by providing them access to this information that will help them, course correct at the right Yes. time. वो एक है, एक पिवट लेके आना. पिवट एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है. वो आपको उसी से मिल सकता है जो बंदा उस जर्नी से गुजर चुका है. एंड जब मैं लोगों से बात करता हूँ इस टॉपिक के बारे में तो वो यही बताते हैं कि हम सुन रहे होते हैं कि बंदा क्या कह रहा है और हमें पता है कि भाई 2 साल बाद क्या होगा, इसके साथ 3 साल बाद क्या होगा और 5 साल बाद क्या होगा. तो वो अगर उसको पहले से ही पता चल जाए एंड ही कैन करेक्ट दैट एज पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एज पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, किस तरह से स्केल करना है, जैसे आपने बात की थी, तो दैट विल बी सर्टनली वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम. अच्छा, हमने बात की इंक्यूबेशन के बारे में, हमने बात की कि स्टार्टअप्स को क्या फ़ायदा मिल सकता है. But that's not what HUB47 is all about. It's the aspiration is actually higher. From my understanding, Hub जो है एक प्लेटफॉर्म बन रहा है and community डेवलप कर रहा है. उस पर ज़रा आप देखें, जब हब का obviously core concept was all about incubation, but over a period we realized कि incubation से तो हम पैसे नहीं कमा सकते और इस अदारे को चलाने के लिए पैसे चाहिए और अभी तक फंडिंग सोर्सेज बड़े क्लियरली एविडेंटली सामने नहीं आए हैं. सो देन वी स्लाइटली पिवटेड. नॉट, आई वुड नॉट कॉल इट अ पिवट, आई वुड कॉल इट एन डायरेक्शन वी हैव एडेड इन द ओवरऑल इकोसिस्टम. हमने कहा यार हम स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहे हैं बट हम मीडियम इंटरप्राइजेस और लार्ज इंटरप्राइजेस को भी सपोर्ट कर सकते हैं. जी. बिकॉज देयर लॉट ऑफ मीडियम टू लार्ज और SMEs जिन्हें हम कहते हैं पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की, जो UAE आना चाहती हैं, UAE में काम करना चाहती हैं और जो UAE में ऑलरेडी आ चुके हैं लेकिन वो समहाउ वो ग्रोथ नहीं अचीव कर पा रहे हैं ड्यू टू मल्टीपल रीजंस. सो व्हाई डोंट वी आल्सो बिकम एन enabling platform for them as well. Yes. And they are at a stage where they can also in one way or another fund us directly or indirectly. In certain cases in form of services, in certain cases hard cash or whatever, or services as well. So that is where we
added the direction or dimension of a networking platform, Hmm. a business growth and enablement platform. तो उसमें हमने क्या किया कि हमने कहा ओके नाउ व्हाट वी विल डू वी विल प्रोड्यूस कंटेंट जी फॉर दीज कंपनीज टू लर्न फ्रॉम. Yes. ठीक है कि वो इस कंटेंट को देखें और समझें और लर्न करें, लोगों की जर्नीज को अंडरस्टैंड करें, उससे लर्न करें. प्लस वी स्टार्ट विद द क्लासेस कि हमने कहा हम ऑनलाइन क्लासेस फ्री क्लासेस फॉर जी. एवरीवन, and these are on different topics: how to build a pitch, how to do financial planning for your company, how to select the right technology for your idea, but all of these areas. हम वो classes online शुरू करें. And then we also we started partnering up with large scale networking organizations Right. जिनको जो पाकिस्तान में है, जी. और उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए यूएई के अंदर Hmm. कि आप पाकिस्तान में बहुत सक्सेसफुल हैं, आपने बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर लिया और अब आप यूएई में एक्सपैंड करने का ख्वाहिश रखते हैं, ठीक है, आपके एम्बिशन है, और वहाँ पे आपको फंडामेंटल चैलेंज क्या है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. जी. बिकॉज दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम समबडी नीड्स टू लुक एट व्हेन दे मूव टू यू. Yes. सो हमारे और हब के पास सबसे बड़ा फैसिलिटी ही इंफ्रास्ट्रक्चर की है. जी. Because we have a place where you can come, you can sit, you can do your networking, you can call up your meetups, or you can do whatever business activities you want to start with. So I think that is something is up for offer, and that is the dimension we have added: a networking and a thought leadership and a learning platform side by side with an incubation platform. And I also believe strongly that an incubation platform should always be tied up with a learning platform. Right. Because that is a natural process. जी. उसी लर्निंग प्रोग्राम से ही आपके पास मेंटर्स, टीचर्स, कोचेस आने हैं जिन्होंने इन लोगों को फर्दर ग्रो करवाया. आई थिंक बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि एक सर्कुलर इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है विच इज़ फीडिंग ईच अदर एंड दैट्स अ perfect kind of system. You have your incubators on one side जो आपका core program है and you're supporting them. What do they need? They need access to the advice that you're giving them. That's your team. And then they also need advice. They need access to the community. They're the people who can open doors, who can do the right link-ups, who can provide the right mentorship as well, and who could become key partners in the future. तो वो एक बड़ा अच्छा एलिमेंट आ जाता है. And then you provide them with the physical space to come together and meet up, have events. एक बहुत अच्छा इसमें potential नज़र आता है for it to blossom, for it to grow. And I think ऐसा नहीं है कि आप एक इदारे को बस फंड करने के लिए आ रहे हैं, जैसा हमने they are getting a lot out of it. I think it will be a net positive for them as well. Yes. Which is where the power lies, I think. Because lot of these small to medium organizations also sometimes suffer from ideation and fresh ideas. मतलब वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान में डेवलप हुई, यूएई में आ गई, सस्टेन कर रही है, लेकिन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेंस हमेशा डे टू डे होती है. जी. ठीक है, इट्स ऑलवेज यू डिलीवर एंड देन यू डिलीवर, सो इट्स अ कंटिन्यूस साइकिल. बट over a period of time organization would like to move into productization. वो जाते हैं कि we build a product जो कि पैसे कमाए, बजाय इसके कि हर वक्त हम ये इस तरह सर्विसेज में काम कर रहे हैं. So when they become part of Hub, they would have the exposure towards those startups which are now up and coming. Yes. With new ideas. So they would be interested in one of the products. यार ये जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज पे somehow काम कर रहा हूँ, something like that. But this new idea is going to change the property management landscape. So why don't I become the early investor and somehow try to acquire it or partially acquire it, get shares into it and get involved in the process. Because अगर ये idea flourish करता तो ये मुझे disrupt करेगा सबसे पहले मेरे services model को. तो why don't I get the opportunity to get into that? So I think this is an excellent in that sense as well. I think ये बहुत ज़बरदस्त बात है. एक innovation की फिजा कायम हो गई है, to use a poetic term. And yes, exposure for founders, exposure for existing businesses should create a very large impact. आपने एक interesting point पे हमें ले आए हैं खुद ही, and that I think सब कुछ तो हो जाता है, बट इधर आके मामला रुक जाता है, एंड दैट इज़ फंड रेजिंग. Yeah. पहले तो ये बता दें,
should you go for fundraising? Should you not go for fundraising? So we're talking about the startup. Yes. So it is a very loaded question in a sense. इसके अपने pros and cons हैं. There both sides to it. So exception उन चीज़ों को साइड पे कर देते हैं पहले कि ऐसा स्टार्टअप जिसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट के बगैर आगे मूव ही नहीं कर सकते. So there if you're building something which requires, so for example you're building a new algorithm, a new engine, you require a huge amount of funds to that, because it's an R&D project. Yes. It is going to take years or months to build something and then maybe productize it, monetize it. Examples are like ChatGPT जैसे जो चीज़ें हैं. It took years to build that and then you eventually monetize it. Yes. So अगर तो आपका idea is towards that side, then funding के अलावा आपका कोई source ही Option ही नहीं. ठीक है, आप उसके अलावा सोच नहीं सकते. लेकिन ज़्यादातर ideas ऐसे नहीं होते. ज़्यादातर ideas वो होते हैं जिनके अंदर आपके पास revenue potential जो है ना वो immediately exist करती होती है. And my personal advice to founders and startup founders would always be to bootstrap it as much as possible. It gives them multiple advantages. सबसे पहले, when you eventually get to the funding round, you are in control of your startup. You are calling the shots because you have proven to the investor that you have a traction. Yes. ठीक है, आपने कुछ पैसे कमा के दिखा दिए. इसका मतलब है कि now you're not at a seeding level. You are at a level where you need scaling money. So ideal scenario ये है कि आप scaling के लिए पैसे लें. Ideal scenario ये. जी. लेकिन जाहिर बात है there are situations जहाँ पे ये possible नहीं होता है and you need seeding level money as well. Yes. अच्छा, अगर ऐसी situation है, so एक जो challenge I would relate with this question basically is, lot of startups right now I see are based on the whole concept of funding. बिल्कुल. कि यार ये मैंने ये आइडिया कॉपी कर रहा है किसी का, दुनिया में फलानी जगह पे हो रहा है, मैं इसको कॉपी करूं, अच्छी सी पिच बनाऊं, फंडिंग लूं और 6 महीने साल के अंदर निकल जाऊं. जी. मोस्ट ऑफ दोज फेल बिकॉज वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड कि जो यूनिकॉर्न का शोर है ना कि यार अब यूनिकॉर्न क्यों नहीं निकलता पाकिस्तान से, उसकी बुनियादी वजह यह है कि यूनिकॉर्न्स आर पैशन प्रोजेक्ट्स. देयर आर ऑलवेज पैशन प्रोजेक्ट्स. आप एक आइडिया को लेते हैं और फिर उस आइडिया पे आप पैशनेट हो जाते हैं along with being realistic and businessman at the same time, but you really want to grow that idea and you work on the idea not for the sake of getting the fund and improving your lifestyle, rather improving that idea, solving that problem. ये एक fundamental gap I am seeing right now in a lot of startups, that they are not there to change the landscape. They are not there to solve a problem. They are there to get a quick investment and exit. So exit strategy की हमेशा बात हो रही होती है continuously. मतलब everybody is talking about exit strategy while they are having the business plan पहले दिन ही, which in my opinion obviously a lot of people can differ to that. Exit strategy is the investor strategy. Exactly. It's not a entrepreneur strategy. Entrepreneur ने तो build करना होता है एक चीज़ को. अगर उसके अंदर day 1 पे ही ये thought process है कि मैंने इसको किस दिन निकलना है इससे, तो that application I won't think would ever be a unicorn. Unicorns वही बन सकते हैं जहाँ पे आपका I think we see examples in Dubai as well of that. Yes, I think we can take the example of Kareem here, जिन्होंने एक yes, it is similar to something that exists in other, but it was done in a very passionate way. Yes. To make it better, and that is not easy to do. Yes. अगर कोई बहुत बड़ी आपके सामने दूसरी तोप चीज़ बैठी हुई है और आपने कि नहीं मैं तुम्हारे साथ पंगा लूंगा और तुमसे बेहतर करके दिखाऊंगा. Exactly. So that requires passion, that requires alignment. Yes, exactly. वो exit strategy mindset से नहीं हो सकता. जी. ठीक है, वो इसी mindset से हो सकता है कि Uber is doing this 10 things, we are going to do these 10 things better, and we are also going to do these 11 and 12. Yes. ठीक है, and better than Uber. That can only happen when you are really, really connected with that idea, when you're really passionate about it, when you really think and spend time on it. If the whole game is about grow it, sell it out, then you're never going to reach that point. Yeah. And you would have sold yourself to Uber when they come. Yeah. So I think that's a very important point. The why is very important for any founder, and it is a critical success factor. I think as investors as well, good investors always look at that. कि especially जो venture space में है, अगर कोई किसी को fund करे तो the most critical element is कि founder कौन है, क्या उसका profile है, क्या उसकी mentality है.
फाउंडिंग टीम. फाउंडिंग टीम. इन्वेस्टर्स के लिए फाउंडिंग टीम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया. Investors के लिए फाउंडिंग टीम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, बिकॉज फॉर देम इट्स ऑल अबाउट द टीम. ट्रैक्शन है तो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट अगर टीम अलाइन नहीं है ना, और जितनी मर्जी ट्रैक्शन है, दे वोंट गो फॉर इट. सो टीम हैव टू बी अलाइंड. And I think linking it back to HUB47, whether you are going to bootstrap, and we would encourage most founders to bootstrap as much as possible, because एक और बड़ा important factor इसमें आ जाता है जो कि शायद देर से समझ में आती है founders को, कि if you raise too early, then you lose alignment as well, क्योंकि आपका अपना जो है stake कम हो जाता है, आपके there is not as much value for you for the effort and value that you're adding. It's not just about the value. It's about the friction you add to the equation. So, for example, you've sold 10% of your stake to someone who's totally not of this business. They have no understanding of your business and business model, and you just sold 10%. अब 90% तो आपके पास ही है. You are the main person. But now that person is a board member. और आपको आप जस्टिफाई तो कर रहे हैं उसको हर बात को. मे बी फाइनल डिसीजन आपका होगा. यू कैन ऑलवेज टेक द एग्जेक्टिव कॉल, बट you still have to have that conversation repeatedly. That becomes a nuisance. So इसकी बहुत popular example, दो बहुत बड़ी popular examples हैं. Dell went public and then back to private. और this is a classic example. Why? Because Dell जब public हो गई, पैसे ज़्यादा आ गए. But the company lost its vision, direction, और वो dilute होना शुरू हो गई in terms of growth. And then it went back to private. So this is very common. दूसरा Twitter जो now, which is X, the very reason for it to be still private, obviously Elon Musk is a different kind of person, but this is one of the reasons. Because if there is a vision, okay, I can carry on this vision. I don't care about the rest of the world. Because आज अगर X के board of directors होते, the kind of things X is able to achieve in the last 1 to 2 years after Elon Musk joining, the transparency और जो press का एक pure concept है transparency का, that was never there. Twitter was essentially controlled by hidden powers. Yes. But not anymore. Not anymore. And that again हम independence की बात करते हैं, हम ownership और relatability की बात करते हैं, तो that gets diluted for sure जब एक different set of objectives आ जाते हैं in that. Vision की alignment ही नहीं है. जी. एक बंदा बोर्ड में ऐड हो गया है जो आपके विजन से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि उसने पैसे डाले, उसको पैसे चाहिए. उसका एक ही विजन है कि मैंने पैसे डाले हैं, मुझे पैसे कमाने हैं. That's it. He is not worried about your idea. Jay, thank you so much for your views on that. थोड़ा सा हम बात को कंक्लूजन के लेके जाते हैं. हब अब आ गया है, अब लिसनर्स को क्या करना है? What is required of them? देखिए, I would have a very clear message here. ठीक है, HUB47 is for Pakistan. It's a platform for Pakistanis. It's a platform for Pakistan to grow. Right now, Pakistan needs these kind of platform. पाकिस्तान को global presentation चाहिए, पाकिस्तानी startups को global access चाहिए, पाकिस्तान को dollars चाहिए. जी. और ये सारा कुछ इस जैसे platform के through ही हो सकता है. So I would urge startups to come, apply, go through our process. We have recently signed up with the Canadian Startup Association, which means Hub can become a nursery, a platform for those startups in Pakistan who want to eventually target the North American market. Right. So Hub can become the training ground for them. So they get trained here and then move to Canada and set up their company in North America. Excellent. Other than that, investors, they have opportunity to invest in the right kind of startups. They need to invest in Hub, because the bigger Hub gets, the bigger its impact. Yes. Tech companies, they need to come on board with us. They need to support us with their skill set, with their funds, with their reach, in enabling these startups and creating a connection within Pakistani ecosystem as well. Of technology and other businesses. So this is my message to all the business owners, startups, everyone, to come connect with Hub and use this platform to grow. And this platform will
grow automatically, and Pakistan will grow automatically. Inshallah. And I think, again, because the why and the intentions are clear, I think there is no reason that it will not succeed. It will, as people know about it more and more, we will be successful in achieving those objectives. And I wish you the best of luck as well. Thank you. Thank you very much. We hope कि आप लगे रहें इस तरह से, आपके साथ और लोग जुड़ें जो इस इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करें और इस मूवमेंट का पार्ट बने. And Movement, yes, that's the right word. you know, it's a movement. It's definitely it is. इस मूवमेंट का पार्ट बने एंड इसको आगे लेके चलें एंड इम्पैक्ट क्रिएट करें एंड पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचे, पाकिस्तानियों को फ़ायदा पहुँचे, whether they're here, whether they're in Pakistan, or whether they intend to go anywhere else in the world. Yes. Thank you. Thank you.